Namaskar. Hello and welcome to GuruDev's classes. I'm your teacher Siddharth Singh. I live in Gazipur and I teach math, science, English grammar and computer to all classes under CBSE board. My motive is to train the children's mind to think instead of memorizing the facts. Thank you. Hello and welcome to GuruDev's classes. आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन. पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा प्रोनाउंस की डेफिनेशन और उनके काइंड्स. इनमें से एक है पर्सनल प्रोनाउन. आज हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं. डेफिनेशन है प्रोनाउंस which are used in place of persons. Person is called are called personal pronouns. ठीक है, ये डेफिनेशन है. अब इसमें लेकिन पर्सन्स कौन कौन से हैं? ऑन बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है. 3 पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं. एक जो बोलने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, तो एक पर्सपेक्टिव तो हुआ मेरा पर्सपेक्टिव, मैं जो बोल रहा हूँ. फिर दूसरे आप इंक्लूड हुए जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, और तीसरा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव देयर आर 3 persons which are replaced by pronouns. First, that is first person या the speaker. फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं स्पीकर को, जो बोलने वाला, जिसकी जो हम हैं, जो बोल रहे हैं बात को, उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन. तो पर्सन हु स्पीक्स is called first person. तो फर्स्ट पर्सन में एग्जाम्पल में आ जाएंगे मैं यानी आई, वी हम, प्लूरल हुआ तो हम, वी. सेकंड है सेकंड पर्सन. पर्सन स्पोकन टू या जो लिसनर कह सकते हैं, जो हमारी बात को सुन रहा है, द लिसनर. पर्सन who listens to the speaker. Person who listens to the speaker. Person who listens to the speaker
is called second person. इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों केस में केवल यू का यूज करते हैं. Now third one is our third person. या जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन. पर्सन अबाउट whom the speaker speaks. The speaker यानी जो फर्स्ट पर्सन जो है वो जिसके बारे में बात कर रहा है, उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन. पर्सन अबाउट whom the speaker speaks is called third person. Third person. For example, it, they, etc. Now, on the basis of position, on the basis of position in the sentence, there are two types of personal pronouns. Two types of personal pronouns. First one is subjective. When personal pronoun is used as a subject, then it is called subjective personal pronoun. Second one, objective. When personal pronoun is used as an object, then it is called objective personal pronoun. Personal pronoun. को एक कॉमन सेंटेंस इस कॉमन एग्जांपल से समझ लेते हैं. एक सेंटेंस लेते हैं. आई टोल्ड यू दैट ही इज माई फ्रेंड. यहाँ प्रोनाउन कौन कौन से हैं?
आई, यू एंड ही। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही जो है थर्ड पर्सन है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, बात कौन कर रहा है, आई, तो ये सब्जेक्टिव हो गया। और किससे बात कर रहा है, यू से, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव के बीच डिफरेंसेस की। थैंक यू।